जाए। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय, मथुरा धाम की जय, मायापुर नवद्वीप धाम की जय, जगन्नाथपुरी धाम की जय, गंगा माई की जय, जमुना माई की जय, तुलसी देवी की जय, भक्ति देवी की जय, श्रीमती राधारानी की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऑल गौरीश assembled हरे कृष्ण। ऑल गौरीश assembled हरे कृष्ण। ऑल गौरीश assembled हरे कृष्ण। ऑल गौरी श्री गुरु श्री गौरांग पाजी महाराज की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति शुपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवंशो श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथनीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येवश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतेशे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 आनंदलीलामय विग्रहाय हेमावदिव्य छविसुंदराय तस्मै महाप्रसादप्रदाय श्री चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते श्री चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते श्री चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते. So the day on 31st, we are speaking about, what is the subject is? Why are there so many obstacles in Hari Bhajan? Yes, we are having so many obstacles in Hari Bhajan. So what are those obstacles? Though we want to do Hari Bhajan, but why we are having so many obstacles in doing Hari Bhajan? हरि भजन रे एते प्रतिबंधक कहीं कौन पाई आमे एते प्रतिबंधक आमर आसुछि आमे प्रथमे कहिथिलु जे गुरु ग्रहण संपर्क रे जे कि भली गुरु आमे ग्रहण करूछु ताहारी उपर निर्भर करूछि आमर भजन. आमे जणे जदि शिव गुरु बा धर्मध्वजी गुरु को आमे ग्रहण करिबा बा तांकर आश्रित हवा ताहले आमर हरि भजन ठीक भाव हबो ना. We are saying that day that the Hari Bhajan depends on what type of guru we are accepting. If you will accept a Shuddha Guru or Dharma Dhoji who is showing that his bhajan is nice and he is a very elevated devotee, but inside so many desires are there, kamana, vasana. So they are called Dharma Dhoji Guru. So if you will accept this type of Guru, we cannot progress in our Hari Bhajan path. आमे कहिथिलु जे जदि आमे एक गुरु को ग्रहण करिबा जे कि भितरे बहुत कामना वासना रखी ऊपर को से बहुत उन्नत भक्त बोली देखौचंती ताहले आमे हरि भजन पथरे अग्रसर हेई परिबा ना. तापरे कहुची जे जदि आमे भक्त हेलु आमे दि सात्विक मार्ग को ग्रहण न करिबु तामसिक एवं राजसिक मार्ग रे रहिबु ताहले मध्य हमर हरि भजन हबना. Again we said that if you will not accept the path of mood of goodness and you will just be influenced by the mood of passion and mood of ignorance, then also we cannot do Hari Bhajan. आमे तिलक करचु सब करचु सब प्रकार
वैष्णवर सबू बेश पोशाक परिधान करुचु आमे मंत्र उच्चारण करुचु विभिन्न प्रकार श्लोक उच्चारण करुचु किंतु से सबू शुआ पक्षी मंत्र उच्चारण पर ही जाउछि we are putting tilak, we are putting this dress as a Vaishnava, and also we are uttering so many mantras, so many shlokas, but that is becoming just like a parrot. Parrot is also uttering some mantra. या परे आ गोटे बड़ जिनिस होची जे जो माने सद्गुरु तांको निकट को जो भक्त माने आसीबे आश्रय ग्रहण करिया पाई से तांको शिक्षा देबे दुईटी कथा शिक्षा देबे गोटे होची जे तुमे किछि सहन शक्ति बढ़ाओ आ तुम्हें किछि सहयोग मनोवृत्ति बढ़ाओ ए दुईटा विषय शिक्षा देबे जदि जने सद्गुरु को पाक आम जीवा से आमके दुईटा विषय कहबे इफ विल अप्रोच ए ट्रू गुरु ही विल एडवाइज अस टू जस्ट डेवलप टॉलरेंस एंड जस्ट कोऑपरेट टॉलरेट एंड कोऑपरेट श्रील प्रभुपाद जी महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज माई गुरुदेव they were all saying the same thing, tolerate and cooperate. कौन सहिबा ना आम प्रति जदि केही दुर्व्यवहार करे आम प्रति कहीं अत्याचार करे ताहले आम ताको सहिबा if anyone will misbehave with us, anyone will just chastise us or even physically hit us, we should tolerate. But what is that cooperation? What the meaning of cooperate? The cooperate means we should cooperate with our Guru. Cooperate with our Guru so that our Gurudev's mission will run nicely. सहयोग मनोवृत्ति कौन सहयोग सहयोग होची जे आमे आमर गुरुदेवंकर जो कार्य नहीं से आसीचंती जो कार्य से करूछंती सेथिरे आमे सहयोग करिबा गुरुदेवंकर अन्य किछि कार्य नाही कौनसी भौतिक कार्य तांकर नाही तांकर एकमात्र कार्य जे भगवान कृष्णंकर संतोष विधान एवं सेइथिरे आमे निजको उत्सर्ग करिबा एवं सहयोग करिबा we should cooperate with Gurudev so that Gurudev can run his mission nicely. What is his mission is? He has nothing to do material activities. There is no question of any material activities. His only activities is to satisfy the Supreme Lord Krishna.
And we must cooperate with Gurudev so that Gurudev can fulfill the desire of Krishna. The problem is here. We may be able to tolerate something, but actually, are we cooperating with Gurudev? যাবতীয় সমস্যাটা এইଠି ଅଛି ଯେ ଆମେ ହୁଏତ ସହି ଯାଉଛୁ ଅନେକ ଜିନିଷ ଆମେ ସହି ଯାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ପ୍ରୀତି ବିଧାନରେ ସହଯୋଗ କରୁଛି କି এইଠି ହେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ଆମେ ସହଯୋଗ କରୁନାହୁଁ आमे ताहले बुझिବାକୁ पड़िବ जे गुरुदेव को प्रति आमे असहयोग मनोवृत्ति पोषण करिछु if you are not cooperating with Gurudev we should understand that we are non cooperating with Gurudev. This Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur said this thing and his follower one Maharaj was saying three things. He was saying in Bengali he was saying asahajogita, pratidvandita, virodhita. One Maharaj, follower of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he was quoting from Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur and saying, non-cooperation, competition, and what do you say? Virodhita, what do you say? Going against his desire, virodhita. ये असहयोगितार कारण कौन असहयोगितार प्रतिद्वंदिता आसी प्रतिद्वंदितार विरोधिता आसी ये असहयोगितार कारण कौन व्हाट इज द कॉज ऑफ नॉन कोऑपरेशन व्हाई वन इज नॉट कोऑपरेटिंग व्हाट इज द रीजन इज सिंपली लाभ पूजा प्रतिष्ठा यार कारण होची आमर लाभ पूजा प्रतिष्ठा सेतिपाय आमे गुरुदेव को सहयोग करि पारु नाहु कारण गुरुदेव को सहयोग करिया को गले संपूर्ण भाव गुरुदेव देवंकर इंगित रे चलिया को पड़िबो निजर स्वाधीनता रहिबो ना सेई टिको को आमे करिया को चाहुना we are not doing anything according to Gurudev's desire. We have some desire for labha, some material benefit, puja, worship, pratishtha, name, fame. मु गुरुदेव को सहयोग कले मोर कौन लाभ हम कौन लाभ हम मोर किसी लाभ हेनी मु कहीं कारण गुरुदेव सहयोग साहाय्य करिया को जीवी
What benefit I will get if I will cooperate with Gurudev, I will help Gurudev. So we are always calculating. ସବୁବେଳେ ଅଙ୍କ କଷା ହେଉଛି କେତେ ଲାଭ ପାଇବି ମୁଁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ କଥାରେ ଚଳିଲେ ମୋର କି ଲାଭଟା ହେବ ମୁଁ କେତେ ପୂଜା ପାଇପାରିବି ମୁଁ କେତେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅର୍ଜନ କରିପାରିବି ମୁଁ କାହିଁକି ଗୁରୁଦେବଙ୍କ କଥାରେ ଚାଲିବି ଇଏ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର କାରଣ ଏ ହେଇଛି ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଇଛି ଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଆମେ କିଛି ମନରୁ କହୁନାହୁଁ ଯାହା ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିଛୁ ତାହା ହେଇଛି ତାହା ଦେଖିଛୁ ହେଇଛି ଜଣେ ଭକ୍ତ ସେ ପେପର ବାହାର କରିଦେଲେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର କିଛି परमिशन नहीं नहांती कि पचारि नहांती किछि आमे पेपर देखला बेलू इस्कन भुवनेश्वर ये जिनस करुछि आपण माने जोग दियंतु आमे गलु गुरुदेव पाक नहीं कि एटा देखैलु गुरुदेव ये भली बाहरछि कोन करबा गुरुदेव तो बड़ हैरान कथा हो गला हां तुम मैंने के आसीना से भुवनेश्वर को नंदकिशोर को आसतिल देवानंद थिला बेले आसतिल नाई गीता प्रचार होउछि गीतार कोर्स करा होउछि आपण माने आसंतु गीता कोर्स करंतु आपण मान को फ्री रे जो माने प्रथम द्वितीय तृतीय हेबे तांको हमें फ्री रे तीर्थयात्रा नै जिवु पेपर बाहरी गला अथच गुरुदेव जानते बहुत बहुत हैरान हवा पड़ी आमको तापर बहुत लोक आसीगले बहुत एप्लिकेशन बहुत लोक जिते गुरुदेव कहले कियो तुम आमको पचार तुम्हें जिते बड़ कथाटा करदेल तुम पचारिच नहीं गुरुदेव मुझे करटा मंदिर ये हम सी हम केते प्रकार से उत्तर शेष मंदिर निर्माण हवा लगी टोकन छपा ही गला गोटे टोकन रो दाम से 100 टका ना केला टोकन देदेले 100 टका लेखा देवे मंदिर निर्माण हम पचारि गुरुदेव पचार ना करगले केते से आदाय कले केते टोकन छपई केते टोकन रो पैसा आसला तार कौन हिसाब नहीं अनुप जलटा प्रोग्राम हम रिसीट बही आमे परवर्ती अवस्था पाइलु केते टंकार रिसीट कटाई किंतु किछि नहीं मंदिर निर्माण हम आमको अनुप जलटा प्रोग्राम चलेगा से चलेले आमे चलेबे से चले आमे कहवानी आमे प्रेसिडेंट अच्छु आमको पचरा नहीं तापरे ए जो गीता ये गीतार अधारू बाबा पेड़ी पुटला बांधिकी पळेले सन्यासी हेबे बोलिकी एठी सन्यासी हेई पारिबे ना गौरबंधु स्वामी सन्यासी हबाकू दब ना पळेले सन्यासी हबाकू आउरी जने जाई बहुत अच्छे उदाहरण मुझे कथा डिटेल कहवा चाहू ना एगुड़ा कौन सब one devotee he published in newspaper the Gita course we have started in this temple you join who will become first second third they will be given free ticket to go tirthayatra
how much money he collected by that, we don't know. Then he started floating some coupon, 100 rupees coupon. How much coupon he gave, how much money he collected, nobody knows. So I told to Gurudev, then Gurudev called him, hey, what is this? No, I am doing for the welfare of temple. Then he left. He left for what? To become sannyasi. Because our Gurudev will never make him sannyasi. So he went to Gaudiya Math and become sannyasi. So one can go against Guru. How many books Gurudev has written? And if I will remain in ISKCON, I cannot print, I cannot publish any books. So, money will come, puja will come, worship will come, pratishtha will come. If I leave Guru, so what about bhajan? Yes. Hey. ତେଣୁ ଆମର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ଲୋକ କେମିତି ଆମକୁ ଭଲ କୁହନ୍ତୁ, ଲୋକାକର୍ଷଣ, ଲୋକ ଆକର୍ଷଣ, ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବେ ବା ଲୋକ ଆମ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଇଚ୍ଛା. What is the desire? People, general people will be attracted towards us. That is the only desire. No other desire is there. प्रतिष्ठा पाइले आमे लोक हमको केते बाहा बाहा करिवे, केते उच्चार रखिबे, हाँ दरकार पड़ले आमे गुरु को विरुद्ध रे जीवा. ହେଇଗଲା ଲାଭ ପୂଜା ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଅସହଯୋଗିତା, ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା, ବିରୋଧିତା. ତାହେଲେ ହରିଭଜନ କେମିତି ହବ? ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକମାନେ ଆମ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତୁ. ଆମେ ଏଇଟା ଚାହୁଁଛେ ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ଆକର୍ଷିତ ହେବା, କୃଷ୍ଣ ଆମ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବେ, ଏଟା ଚାହୁଁଛେ. What we want? People, general people will be attracted towards us, or we will be attracted towards Krishna, and Krishna will be attracted towards us. What is the goal of our life? हरिभजन रो कौन लक्ष्यटा कौन? जे आमे कृष्ण के प्रति आकर्षित हवा, कृष्ण आम प्रति आकर्षित हेबे. केमितिका ना आमे यदि कृष्ण को प्रीति दे पारिबा, प्रेम दे पारिबा, ताहले कृष्ण आम आड़क आकर्षित हो आसबे. आमे तांको आड़क आकर्षित हवा, सी आम आड़क आकर्षित हेबे. ये लोक आकर्षण कौन मिलियो? If people will be attracted towards someone, what he will get?
जो आकर्षण ये कृष्ण को प्रति आमर आकर्षण कृष्ण आम प्रति आकर्षित हेबे प्रेमाकर्षणी च आमर बैवाल्नी प्रेमाकर्षित कृष्ण हाँ ये आकर्षण भितर रही कौन परस्पर को आकर्षण कर गोटे भक्त आ गोटे भक्त प्रति आकर्षित हो जड़े भक्त कृष्ण के प्रति आकर्षित हो कृष्ण मध्य भक्त प्रति आकर्षित होती भितर रही कौन व्हाट इज इनसाइड the bhakta is being attracted by another bhakta a bhakta is being attracted by krishna is attracted towards bhakta what is inside what is the reason why it is happening simple आनंद केवल आनंद या भितर अच्छे आम जन को प्रति आकर्षित हो जाऊँ आनंद थिबा तो ना वी आर बीइंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स समवन बिकॉज गिविंग सम प्लेजर आनंद ये आनंदटा होची कौन भगवान कृष्णंकर आह्लादिनी शक्तिर कार्य this ananda this bliss is coming from Bhagavan Krishna's pleasure giving potency आह्लादिन हाँ तेणु आमे जो भक्ति को आश्रय करिछु से भक्ति रे आनंद रही जो भक्ति रे आनंद नहीं से भक्ति नुहे आमे भगवान को किसी ऑफरिंग करुछु से आनंद नहीं से ऑफरिंग भगवान ग्रहण करिवे भोग भगवान ग्रहण करिवे समथिंग वी आर ऑफरिंग टू भगवान कृष्ण इफ वी डोंट हैव प्लेजर when we are offering it or cooking we have no pleasure that bhoga will not be accepted by Krishna कि आनंद तुम्हें तांकु दबो बाबा हाँ कि आनंद तुम्हें तांकु दबो से परा मदन मोहन मोहिनी मदन मोहन मोहिनी श्रीमती राधाराणी तांको आनंद होउचंती आमे कि आनंद तक दे परिबा मदन मोहन मोहिनी who is enchanting the mind of material Cupid, he is Madana Mohana. And who is enchanting Madana Mohana? Is Madana Mohana Mohini. That Madana Mohana Mohini is giving pleasure to Krishna. So Radharani is Madana Mohana Mohini, Bhuvana Mohini. सारा जगत को से मोहित करिवार शक्ति तांकर अछि जे कृष्ण को मोहित करि पारुछि सारा जगत को से मोहित करि पारिबो तेणु
आमे जदि से राधाराणी कौन सी प्रकार शरणागत हो पारिबा ताले आमे मध्य भगवान कृष्ण को आनंद दे परिबा आमर भजन सार्थक हो जीवो आम जो हरि भजन करिया आसु या सार्थक हो जीवो इफ वी कैन सरेंडर टू श्रीमती राधारानी and will try to give pleasure to Krishna under the guidance of Srimati Radharani, the Radharani will become, Krishna will become very happy. And our bhakti will be successful, bhajan will be successful. आमे सीधा सड़क श्रीमती राधाराणी किंकरी है पारिबा ना वी कैनॉट बिकम डायरेक्टली द मेड सर्वेंट ऑफ श्रीमती राधाराणी देयरफॉर वी विल हैव टू टेक शेल्टर at the lotus feet of the maid servant or girl companion of Srimati Radharani. सखींकर शरणागत हवाक पड़िब जदि आमे कृष्ण को प्रीति दबा पाई इच्छा करिबा सखींकर शरणागत हवाक पड़िब If you like to give pleasure to Krishna, we will have to surrender to the girl companion of Srimati Radharani. कौन से सखीर गीत अच्छी ना तेणु ये भक्ति जिनिसटा जोटा को भजन बोली कहूचु से भक्ति जिनसर उत्स कौन सेटा को बुझा पड़ो भक्तिर उत्स कौन व्हाट इज द सोर्स ऑफ भक्ति वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस अदरवाइज वी कैनॉट रेंडर डिवोशनल सर्विसेस टू भगवान कृष्ण तेणु भक्तिर माने कौन भगवान को प्रीति विधान ये हूँ भक्ति द मीनिंग ऑफ भक्ति इज टू प्लीज द सुप्रीम लॉर्ड कृष्ण दैट इज भक्ति तेणु ये प्रश्न उठुची जे जदि जने भक्त भगवान को आनंद देला सी कौन आनंद रु वंचित हब कि नाउ क्वेश्चन कम्स इफ ए भक्त इज गिविंग प्लेजर टू भगवान कृष्ण will he be deprived from pleasure? आमे गोटे रजा पाखे नौकरी करुछु हाँ सेवक कहीकि रही आम जो रजाटा को खुशी करदे ताहले से आम भी खुशी हो ना आ रजा को यदि खुशी करि पारने आमे केमि खुशी रहिबा ए साधारण कथा द कॉमन सेंस कॉमन टॉपिक दैट if one is pleasing he is working as a servant of a king if he is pleasing king
then automatically he will be pleased. ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆହ୍ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତି ଅଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ କେତେଟା ଶକ୍ତି ଅଛି? ଆଉ କ'ଣ ଦୁଇଟା କହ? ସନ୍ଧିନୀ ସମ୍ବିତ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆହ୍ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସମ୍ବିତ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସନ୍ଧିନୀ ଶକ୍ତି ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସେବାରେ ଲାଗିଯିବା, ସେତେବେଳେ ଆହ୍ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତିଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା, ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ମୁଁ ଆଜି କାହିଁକି ଏତେ ଆନନ୍ଦିତ ନା ମୁଁ ଆଜି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଛି। ତାଙ୍କର ସମ୍ବିତ ଶକ୍ତିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ସମ୍ବିତ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଜାଣିବା ଶକ୍ତି, ଚିତ୍ ଶକ୍ତି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଇଜ୍ ହାଭିଂ ଥ୍ରୀ ଶକ୍ତି, ସନ୍ଧିନୀ, ସମ୍ବିତ and ଆହ୍ଲାଦିନୀ. When the Alladini Shakti will shower mercy on us, we will be able to know that oh, I serve Krishna for his pleasure, therefore I am blissful. ତେଣୁ ହରି ଭଜନ କରି ଜଣେ ବିଷାଦିତ ହେବ, ଏ କଥା ହେବ ନା। One is going for Hari Bhajan and becoming morose. How it will be possible? If one is becoming morose, means he has not gone for Hari Bhajan. ଜଣେ ଯଦି ଦୁଃଖିତ ହେଉଛି, ବିଷାଦିତ ହେଇଯାଉଛି, ସେ ବୁଝିବା ଉଚିତ ଯେ ତାର ହରିଭଜନ ହେଇନାହିଁ। ହରିଭଜନ କରିକି ଜଣେ ବିଷାଦିତ ହେବ, ଏ ହେଇପାରେ ନା, କେବେ ହେବ ନା। ତେଣୁ ଭାଗବତ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ଲୋକ 6 କୁହାଯାଇଛି। ଭାଗବତ ସେଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଟୋ ସେକେଣ୍ଡ ଚ୍ୟାପ୍ଟର sixth text 6 it is said, स वै पुंसां परो धर्म जतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता जयात्मासु प्रसीदति. The supreme occupation or dharma for all humanity is that by which man can attain to loving devotional service unto the transcendent Lord. Such devotional service must be unmotivated and uninterrupted to completely satisfy the self. भगवान केवे दुखर बसिया देखिछ, विषादित हवा देखिछ कि? हाँ, आखिर लोह गड़ौचंती, मुहटा लंबा हो जाइछि, एक देखिछ भगवान करो? हाँ, भगवान सबले हस हस प्रफुल्ल चित्त. भगवान कृष्ण इज नॉट बिकमिंग morose, oh long face, no.
Always he is blissful, always smiling. कहीं भगवान सब बड़े हस हस आनंदित आमर कहीं हो नहीं आमे कहीं ही पारूँ भगवान is always blissful but we are not becoming blissful. Why? He has no touch of Achit. We are having touch of Achit, Chit and Achit. Huh? तांकर कौन सी अचित्र संस्पर्श नहीं स्पर्श नहीं तांको देहरे सब चित चित अवस्था अछंती तेणु सब आनंदर अछंती आमर अचित्र स्पर्श रोचे आम भितरे तेणु आमे आनंद पाई पारनु we are having touch of achit material touch is there therefore we are not getting pleasure. तेणु एटी कहुची जे मानवर श्रेष्ठ धर्मटा कौन एक कथा कहुची what is the topmost occupational duty of a human being is said here this Shloka saying this. तेणु अध्यक्ष भगवान को सेवा तार अर्थ होची इंद्रिय ज्ञानातीत इंद्रिय ज्ञानातीत श्रीकृष्ण को ठारे सेवा से पुणी कि भली सेवा फलाभिसंधि रहित अभिसंधि नहीं फल पाइबार किसी आशा नहीं फलाभिसंधि रहित संस्कृत वर्ड one is serving Krishna who is beyond the perception of our material senses, and when we are serving him, if we do not have any desire for any type of result from that, then that is called phalabhisandhi rahita seva. केते वर्ष लेखा आमे सब भक्ति राज्य रहिलुनी ए पर्यंत अनर्थ निवृत्ति होउनी काहेकि अनर्थ निवृत्ति हेले निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम आसीबो अनर्थ निवृत्ति हेई गले ता परौडा को सब शीघ्र शीघ्र पळे आसीबो अनर्थ निवृत्ति हो नाही काहेकि so many years we are serving to Bhagavan Krishna, but we are not becoming free from anarthas. कारण आम भितरे फल प्राप्तिर इच्छा अच्छी because we have desire to get some benefit, result by our seva. आमे प्रथम रु कहलु ना कौन होची असहयोगिता प्रतिद्वंदिता विरोधिता ही होची तेणु अनर्थ निवृत्ति होई पारु नाही आम भितर फलाकांक्षा अछि मु करूची सेवा माने मते से देबे मो कथा शुणिबे नहले पानी रे बुड़े देबी
हाँ पानी रे बुड़े दौर ना नहीं पानी रे बुड़े देवी गोपाल को पानी रे बुड़े देवी नहीं यदि मो कथा न सुन आई एम डूइंग सेवा टू हिम ही मस्ट लिसन टू मी ही मस्ट एक्ट अकॉर्डिंग टू माई डिजायर अदरवाइज आई विल इमर्ज इन ओशन फिनिश जयात्मा सुप्रसिद्धति जयात्मा सुप्रसिद्धति आत्मार प्रसन्नता हो नहीं मन भितर अशेष कामना कौन से अशेष कामना हृदय माझे मोर क्रोधी दम्भ पराय हाँ बस ये सब अच्छी तापर को आसीज ऑल दिस थिंग्स विल कम क्रोध दंभ लस्ट ग्रीड डिल्यूजन प्राइड एनवी एवरीथिंग विल कम because आत्मा is not getting pleasure आत्मारे आनंद नहीं तेणु सबू बदगुण गुड़िक आम पाक आसो जिते खराब गुण अच्छी से सब पलि आस आम पाक आमे हला सद्गुरु ग्रहण कलु जन सद्गुरुंकर पादाश्रित हो गलु माया को छाड़ी की आसिलु पुणी मायार पड़गलु यार कारण कौन वी एक्सेप्टेड सद्गुरु ट्रू गुरु वी गेव अप माया वी केम टू सर्व कृष्ण again maya entrapped us. What is this? Why it is happening? Huh? साधु सावधान इटा गोटे सहज रास्ता नुहे मु गुरु को ग्रहण करी दीक्षा नहीं गली हाँ वैष्णव हो गली जपमाला धरी पकेली ये सहज कथा नुहे मोर गुरुदेव कहते बाबा तुम्हें गोटे ब्लेड रे चलुच गोटे ब्लेड ऊपर चलुच धारुआ ब्लेड ऊपर चलुच टिके असावधान रे गोड़ काटदब इट्स नॉट सो इजी आई एक्सेप्टेड ए गुरु आई टुक इनिशिएशन आई एम chanting name but it is not so easy the bhakti path is not so easy our Gurudev said Baba be careful you are walking the razor's edge sharp and razor's edge तेणु कौन करिया पड़िबो मु जो गुरु को पाखरे रही कि तांकर सेवा टिक करुची ता भितरे केते निज इंद्रिय प्रीतिर कथा अछि एटा को आगे देखियो पड़िबो आई एम रिमेनिंग विथ गुरु आई एम सर्विंग गुरु बट आई शुड सी हाउ मच I am going to fulfill my own desire or how much I am giving enjoyment to my senses. जेमिति कृष्ण को पाखरे सेवा कला बेले देखिया पड़िबो जे जो सेवा मु करूची
से कृष्ण प्रीति विधान करुछि कि ठीक सेही बड़ी भाव में देखा पड़ो मु गुरुदेवंकर सेवा जो करुछि ताहा गुरुदेवंकर प्रीति विधान करुछि कि the way we should see that whatever seva we are doing rendering to Krishna, whether it is pleasing Krishna or not. Similarly, we should see that the seva I am rendering to my Gurudev, whether it is pleasing him or not. मते भल लगिला मु कली अनेक कहे जे मते एटा भल लगिला मु कली किरे तुमको जोटा भल लगिला सेटा गुरु कृष्ण को भल लगे बोली कथा अछि होय तो तांको भल लगी न पारे I like it therefore I did it. What you are liking, Krishna may not like it, Guru may not like it. आ गोटे जिनस आ गोटे दिग अच्छे से दिगटा कौन ना मु गुरुदेवंकर अति प्रिय भक्त होइछि किंतु गुरुदेवंकर आउ जो माने अछंती प्रिय तांको प्रति मात्सर्य तांको प्रति मात्सर्य प्रकाश करुछि ताले मोर गुरु भक्ति की भली भाव रे अग्रगति करिवो I am serving Gurudev, but those who are very near dear to Gurudev, I am having envy towards them. किरे एटा कौन आसिक पहुँचलानी एठी ये मो एरिया कुकुर देखिछ तो हाँ सी एरिया भितर पूरे देविन गाड़ी के बापा गोटे बाहर आसलानी से घाम घाम कर खाली the dog they have their own area. If any other dog will come to their area they will just bark and go to bite. Similarly, I was doing seva to my Gurudev. Hey, where from he came? Hey, chalo, chalo, chalo. This is competition. ये होची प्रतिद्वंदिता. किरे कृष्ण जदि कहा सेवारे संतुष्ट होउचंती ताहले तांकु सेवा करियु दियो आमर अन्य सेवा करिबा ना ताकु विताड़ित कर दबा कौन सी प्रकार ता पछे लगी षड़यंत्र करी ताकु विदा कर दबा सेतेबेले कौन हला आमे देखिलु कि आम गुरुदेव प्रीति होउची कृष्ण को प्रीति होउची ना मु मो प्रीति देखुची somebody is doing nice seva to Guru and Krishna but I will make conspiracy, I will throw him out from the temple. In that case, did I think that by my seva, Gurudev was happy, Krishna was happy, or his seva, Gurudev, Krishna, they were happy? I don't think this.
ये होची प्रतिद्वंदितार मनोभाव प्रतिद्वंदी ही जाऊँ आम किंतु प्रतिद्वंदिता नहीं प्रतिद्वंदिता हेले कौन हम तापर आसीज असूया भाव if competition will be there then some type of hatredness will come envy will come तेणु ये भाव में गुरु भक्ति हो पारना ये भाव में गुरुदेव संतुष्ट हो पारे ना तापरे आसीब गोटे विराट प्रतिबंधक सबुठु विराट प्रतिबंधक आसीज कौन सेटा वैष्णव अपराध इज वेरी ह्यूज ग्रेट obstacle will come that is वैष्णव offense तापर आसीज वैष्णव अपराध होची हाथी माता मत्त हस्ती सदृश पागल हाथी ये वैष्णव अपराध होची पागल हाथी mad elephant is mad elephant So therefore, it is stated in Chaitanya Charitamrita Krishnadas Kaviraj Goswami very nicely mentioned this. Jadi Vaishnava Paradho Uthe Hati Mata Upadeva Chindetaro Suki Jaye Pata Tate Mali Jatna Kari Kore Aborana Aparadha Hastir Jaiche Na Hoye Udgama Jadi Vaishnava अपराध उठे हाथी माता उपाड़े व छिंडे तार सुखी जाए पाता. If the devotee commits an offense at the feet of a Vaishnava while cultivating the creeper of devotional service in the material world, his offense is compared to a mad elephant that uproots the creeper and breaks it. In this way, the leaves of the creeper are dried up. यदि वैष्णव अपराध रूपक हाथी यदि माति उठे ताले कौन हम सी उपाड़ी पकेब भक्तिलता को उपाड़ी दब तार सबू डाल पत्र सब छिंडिके सुखीज पूरा रहा भक्तिटा हाँ ताते माली जत्न करे करे आवरण अपराध हस्तिर जाइछे ना होय उद्गम. The gardener must defend the creeper by fencing it all around so that the powerful elephant of offenses may not enter.
सेठी कुहाउची ताते माली जत्न करी करे आवरण आवरण गोटे बाड़ पकेइबो जो थे कि यही अपराध रूपक हस्ती आउ किसी क्षति करि पारिबो ना। प्रभुपाद जी महाराज कहउछन से बाड़टा कौन? प्रभुपाद जी महाराज saying what is that fence? The gardener is a neophyte devotee. And he will put the fence surrounding to that bhakti kripa. तेणु गोटे नवागत भक्त सीए आवरण भित्तिर रहिबो सब तार भक्तिटा सब आवृत होकर रहिबो आवरण भितर रहिबो। तार अर्थ होची कौन ना सीए जो सीनियर डिवोटी अछंती सीनियर भक्त अछंती वरिष्ठ भक्त अछंती तांको मेल भितर से रहिबो। से बाहरी जीव विपद तार विपद अच्छी। He must be surrounded, a neophyte devotee must be surrounded by the senior devotees. Prabhupada saying pure devotees. The senior devotees must be pure devotees. So that the mad elephant will not get chance to uproot bhakti kripa. तेणु आउ उपाड़ी पारिबो ना से भक्ति लता को आउ अपराध रूपक हस्ती उपाड़ी पारिबो ना। सबु बेले प्रभुपाद जी महाराज से गोटे कथा कहते तुम्हें डिवोटी एसोसिएशन भितर रुह डिवोटी मेल भितर रुह भक्त मेल रुह भक्त संग कर नहले तुम्हें केतेबेले माया कब्जा भितर चलीज जानी पारिबनी बाबा। Therefore always Prabhupada ji Maharaj and other acharyas Gurudev, they always advise us to remain with the association of devotees, pure devotees. अरे गेट आरपटे पूरा माया अच्छी तुम्हें गेट भीतर रही जाइछ बोली कौन प्रकार सुरक्षित रही जाइछ बाबा गेट आरपटे माया माया पड़े भी आस भीतर Our Gurudev said, Maya is outside the gate. If you go out, Maya will catch. But Maya is so strong, entering inside also premises sometime. Then, next comes किंतु जदि लतार संगे उठे उपशाखा भुक्ति मुक्ति बांछा जत असंख्य तार लेखा निषिद्धाचार कूटी नाटी जीव हिंसना लाभ पूजा प्रतिष्ठादि जत उपशाखा गण शेक जल पैया उप शाखा बाड़ी जाए स्तब्ध हैया
মূল শাখা বাড়িতে না পায়ে। Sometimes unwanted creepers, such as the creepers of desires for material enjoyment and liberation from the material world, grow along with the creeper of devotional service. The varieties of such unwanted creepers are unlimited. এই ভক্তিলতা সহিত বেলে বেলে ଅନ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବୁଦା ଗଛ ସବୁ ଉଠିଯିବ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଭୌତିକ ଇଚ୍ଛା, ଭୌତିକ ଉପଭୋଗ ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ମୁକ୍ତି ଇଚ୍ଛା, ଭୁକ୍ତି କାମନା, ମୁକ୍ତି କାମନା। ଯେଉଁ ଭକ୍ତିଲତାଟି ବଢ଼ୁଥିଲା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ଲତା ଇଏ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ଦିଟା ପ୍ରକାର ନୁହେଁ, ବହୁତ ପ୍ରକାର। ଅନୱାଣ୍ଟେଡ୍ କ୍ରିପର୍ସ ଆର୍ ଅନଲିମିଟେଡ୍, ନଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍। निषिद्धाचार कुटिनाटी जीव हिंसन लाभ पूजा प्रतिष्ठा दी जत उपसखा गण। Some unnecessary creepers growing with the bhakti creeper are the creepers of behavior unacceptable for those trying to attain perfection. Diplomatic behavior, animal killing, mundane profiteering, mundane adoration, and mundane importance. So, निषिद्ध आचार निषिद्धाचार जो आचरण निषिद्ध कराई, जो आचरण की जड़े भक्त करने कथा नुह से भली आचरण निषिद्ध आचार एवं निजर सिद्धि लाभ पाई विभिन्न प्रकार कुटिनाटी करवा। कुटिनाटी कौटिल्य पर नाट्य व्यवहार कुटिनाटी। गुरुदेव one is doing drama acting diplomatic way, behaving diplomatic way. Prabhupada said jiva hinsana, killing the animals, लाभ पूजा प्रतिष्ठा ये तीनटा जिनस अच्छी ताधर पुणी। तेणु ये कहुच्छी ये सब उपशाखा ये सब कौन होची ना सेक जल पाइया उपशाखा बाड़ी जाए जल छिंचा होची। से जल सिंचनटा कौन कौन गौरांग प्रिय मन तो अन्य आड़े अच्छी कौन कर श्रवण कीर्तन सबुदिन श्रवण कीर्तन हो जल टिके टिके पड़ुछि किंतु इयाड़े एटा बढ़लानी ये सब बढ़ुछि लाभ पूजा प्रतिष्ठा निषिद्धाचार कुटिनाटी ये सब बढ़ीगलानी। The pouring water is going on,
listening and kirtan going on. At the same time, these are all unwanted creepers are growing. If one does not distinguish between the bhakti creeper and the other creepers, what is the use of sprinkling water? ଜଣେ ଯଦି ଭକ୍ତି ଲତାଟା ଆଉ ଅନ୍ୟ ଗଛ ଲତା ଏଗୁଡ଼ାକୁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ତାହେଲେ ଜଳ ଛିଞ୍ଚିକି ଲାଭ କ'ଣ ହେଉଛି? It is misused. Because other creepers are getting nourished. When the bhakti creeper is curtailed. ତେଣୁ ଏଠି କୁହାହେଉଛି ପ୍ରଭୁପାଦଜୀ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଭକ୍ତି ଲତାଟା ରହିଯିବ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦଜୀ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନେଉଛୁ ଆଉ ଯଦି ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ରହୁଛି ଆମ ଭିତରେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆମେ ଅପରାଧ କରୁଛୁ। While we are chanting, if this type of unwanted things are growing, that means we are committing offense. Prathama uposakar Koroye chedana Tobe mulo sakhabadi Jaye vrindavana. As soon as an intelligent devotee sees an unwanted creeper growing beside the original creeper, he must cut it down instantly. ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭକ୍ତଟା ଦେଖିବ ମୋର ଭକ୍ତି ସହିତ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲୁଛି ସେ ତାକୁ ମୂଳରୁ ଛେଦନ କରିବ। Then the real creeper, Bhakti Lata, grows nicely, it returns home back to Godhead. And seeks shelter under the lotus feet of Krishna. ତେଣୁ Prabhupada Maharaj କହିଲେ, if one is misled by unwanted creepers and is victimized, he cannot make progress back to Godhead. ତେଣୁ ଜଣେ ଯଦି ବାଟ ହୁଡ଼ିଗଲା ଏଇ ଲାଭ ପୂଜା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିଷିଦ୍ଧାଚାର କୁଟିନାଟି ଆଦର ଯଦି ବାଟ ହୁଡ଼ିଗଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସିଏ କୌଣସି ବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମକୁ ଯିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବ ନା। ସେ ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ପଡ଼ି ରହିବ। ହରିଭଜନ କଲା ଅଥଚ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ପଡ଼ି ରହିଲା, କ'ଣ ଲାଭ ହେଲା? He did Haribhajan but remain in this material world, could not go to come back to Godhead. So what is the use?
किंतु जदि जड़े सबु प्रकार जत्न नहीं कि तार भक्तिटा को बढ़ई चली ताले कौन हम if someone is very carefully growing his bhakti kripa the result will be what प्रेम फल पाती पड़े माली आस्वाद लता अब लबिमाली कल्प वृक्षे पाय when the fruit of devotional service becomes ripe and falls down the gardener tastes the fruit and thus takes advantage of the creeper and reaches the desired tree of the lotus feet of Krishna in Goloka Vrindavana. ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମ ଫଳ ପାଚିକି ଖସି ପଡ଼ିବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ଯେ ମାଳି ସିଏ ସେଇ ପ୍ରେମ ଫଳକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବ ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛୁ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାଳି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାଳି वी आर गार्डनर खाली हजार थर एपट सेपट कहीं गोटे जगह बसुन हाँ केतरे चेयर रे केतरे तले केतरे एपट रे केतरे सेपट रे एगुड़ाक तो भल लगे खाइबार हेले चाहे धरिक पड़ेब तेणु ये प्रेम फल आस्वादन करिकी मालिटा कौन करिब ना भगवान कर पाद पद्म को चली जीव सेठी से भगवान कर पाद पद्म कल्प वृक्ष जहा इच्छा ता मिलिबो इफ यू विल गो टू गोलोक वृंदावन to the lotus feet of Bhagavan Krishna, then we can get whatever we like. Kalpa Vruksha, desire fulfilling tree. Krishna's lotus feet is. Hey. ताहा से कल्प वृक्षेर कर ऐसे बन सुखे प्रेम फल रस करे आस्वादन. There the devotee serves the lotus feet of the Lord, which are compared to a wish fulfilling tree. With great bliss, he tastes the juice of the fruit of love and becomes eternally happy. ताहा से ही कल्प वृक्षेर ताहा यो ताहा शब्दर अर्थटा कौन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ताहा देयर मीन्स वेयर इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड गोलोक वृंदावन one will taste the juice of the fruit. In Goloka Vrindavana, one will taste the juice of the fruit. What is that fruit is? Se phalata kona? Na bhakti. Bhakti phala rasa aswadana karibo jane.
one will be able to relish the juice of that fruit means bhakti rasa. One will relish bhakti rasa. आमे सब वर्तमान कौ रस पाई व्यस्त करे गौरांग प्रिय बाबा जड़ रस कौन कौन कहल केते प्रकार जड़ रस अच्छी कि चारि पुरुषार्थ चारि प्रकार जड़ रस धर्म अर्थ काम मोक्ष चारि पुरुषार्थ जो माने ए पंचम पुरुषार्थ प्रेम रस प्राप्त होना से माने जड़ रस प्रति धावमान हेबे धाइबे ता पछरे जदि जने प्रेम रस प्राप्त हो गला सी चतुर्वर्ग चारि पुरुषार्थ प्रति दृष्टि दब ना बुझल दिस मेटेरियल मेलो जड़ रस 4 टाइप्स चारि पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष if one will be able to relish this prema rasa love mellow he will never think about any this 4 purushartha chari rasa these are all insignificant achievements for a devotee who is relishing love mellow. प्रेम रस पाखरे ये जड़ रस तृणतुल्य अतिहीन तुच्छ तेणु जड़े भक्त यही प्रेम रस प्राप्त हेले तार आ किसी आवश्यक नहीं से आनंदर रहिबो. If a bhakta will get this prema rasa love mellow, he will be very peaceful and blissful. तेणु यही जो भक्तिलता बीज यहाँ जड़े केतेबेले प्राप्त हब. When one will be able to get this Bhakti Kripa, seed of Bhakti Kripa. Mahaprabhu said, बहु सुकृति जोगु जेतेबेले सुकृतिर तार प्रारब्ध सुकृतिर फल पाइबार समय आसीजिव सेतेबेले से जने गुरु को ग्रहण करिवो शुद्ध गुरु को से ग्रहण करिवो. When once time will come to get the credit of pious activities, he will accept a true guru, pure guru. एवं सही गुरुंकर कृपारे यही भक्तिलता बीजटा प्राप्त हब. By that Guru's mercy, one will be able to get this seed of Bhakti Kripa. खाली तुम्हें बीजटा पाई पकेट रखीदे चलो ना मंजी मिलगला पकेट रखीदे चल
ସେ ହେବ ନା, କିଛି ଲାଭ ହେବ ନା। If you will get that seed of bhakti and you will just keep in pocket, it will not help. Therefore, one has to sow that seed. সেই বীজটাକୁ ରୋପଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏ ବୀଜର ଠିକଣା ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନିଆଯିବ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ବୀଜଟି ଭକ୍ତିଲତା ହେଇ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବ, ମାଇକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭେଦ କରିବ, ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଭେଦ କରିବ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମୟ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକ ଭେଦ କରିବ, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟମୟ ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନରେ ପହଞ୍ଚିବ। If you will take proper care of the seed, then it will grow and penetrate this Brahmanda, this universe, material Brahmanda, material universe. Then it will penetrate the Brahmaloko, Nirguna Brahmaloko. The gunas influence is not there. Then it will penetrate the Vaikuntha Lokas. So much opulences are there. Finally it will reach Goloka Vrindavan, Madhurjamaya. Very beautiful, sweet Goloka Vrindavan. ତେଣୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଆଶ୍ରିତ ହେଲେ ହିଁ ଫଳ ଫଳିବ ତାର। When this bhakti creeper will take shelter at the lotus feet of Krishna, then it will bear the fruit. Prema phala, love fruit. କୃଷ୍ଣ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଠି ସେ ଫଳ ଫଳିବ, ପ୍ରେମ ଫଳ ଫଳିବ। ଯଦି ସେ ସମୟରେ ଫଳ ଫଳିଲା, ମାଳି ଜଳ ସେଚନ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା, ଆଉ ଫଳ ଫଳିବ। ଶୁଖିଯିବ ଫଳ, ତା ଟେଷ୍ଟ କିଛି ରହିବନି, ତାର ସ୍ୱାଦ କିଛି ରହିବନି। When that bhakti creeper will bear the fruit, at that time the gardener will stop pouring water. Then that fruit will be dried, no rasa, no sweetness will be there. ତେଣୁ ଲତା ବର୍ଦ୍ଧନ ବେଳେ ମାଳି ଜାଗ୍ରତ। ଲତା କୃଷ୍ଣ ପାଦ ପଦ୍ମ ଆଶ୍ରିତ ହେଲେ ମାଳି ଜାଗ୍ରତ। When this bhakti creeper is growing, at that time the gardener is very, very careful. When it will reach Krishna's lotus feet, support, you get support there. That time also the gardener is always careful.
तेणु भक्ति बढ़ेवा को जाई माळीटा केते प्रकार असुविधार सम्मुखीन होउची देख इन ऑर्डर टू ग्रो भक्ति द गार्डन इज getting so much impediments, obstacles. केते प्रतिबंधक आसुची तुम्हें कहब जे प्रभुपाद कहले चांट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी हाँ सस्ता है मु हरे कृष्ण कही दूसरी तेणु मोर सब किसी भल मु आनंद हबी प्रभुपाद कहते आ खे बाबा एत सहज नुहे इट्स नॉट सो इजी सिंस प्रभुपाद सेड चांट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी वी आर chanting हरे कृष्ण so why you are not happy तेणु तुम्हें भक्तिलता बढ़ेले ही यही सब विपद आसब when you grow your bhakti kripa all this dangerous situation will arise so many obstacles will come तेणु समस्त अनर्थ को तुम्हें जदि अतिक्रम करि पारिबो ताहाले भक्तिलता को बढ़ई तार प्रेम फल रस आस्वादन करि पारिबो if you can overcome all these obstacles then you can grow your bhakti kripa and you can get the fruit of that and you can release the mellow juice. So, Mahaprabhu, Shiksha, which Mahaprabhu's teaching, which was compiled in Bhakti Rasamrita Sindhu by Srila Rupa Goswami Pad. Mahaprabhu को शिक्षा जहाँ रूप गोस्वामी पाद तांकर भक्ति रसामृत सिंधुरे कहते ता कौन अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुष्ण भक्तिरुत्तमा खाली सेति कोई नांती आहुरी कहते सर्वपादि विनिर्मुक्तं तत्परत्व निर्मलम हुसिकेण हुसिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते बारंबार कहुची तेणु एथिरु नो नीड टू एक्सप्लेन दिस श्लोक एवरीबॉडी नोज दिस श्लोक यार व्याख्या कर आवश्यकता नहीं समस्त के श्लोक जना अच्छी हाँ जानिच ना ना श्लोक ना माने कह पड़ो पर कह आम बहुत थर कह तेणु ये कथा हूँ बर्तमान समय ना पलैवा तेणु या द्वारा से कौन जनाऊँ आम जे शुद्ध भक्तिर अर्थ हूँ केवल कृष्ण सेवा तांको प्रीति पाई से आउ किछि नहीं आउ जहाँ पशिजीव सेटा अविशुद्ध हो आउ जहाँ पशिब ता कौन टा पशिब आउ पशिबा आमर निज इच्छा बुझे there is nothing in pure devotional service only Krishna seva for his pleasure
There must not be any other our own desires. So, ଅନୁକୂଳ ଭାବରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଭକ୍ତି. In favorable direction, we are serving Krishna. That is bhakti. ତେଣୁ এইଭଳି ଭକ୍ତି ଏହା ହିଁ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ଭଜନ, ହରି ଭଜନ. This type of bhakti is called Krishna bhajan or Hari bhajan. ତେଣୁ ଯଦି ଗୋଟେ ତାଲିକା କରାଯିବ ଭକ୍ତର ତାଲିକା, ଆମ ନାଁ ରହିବନି ତା ଦେହରେ, ଆମ ନାଁ ରହିବନି. If you make a list of bhakta, devotee, our name will not be there. Because we are not free from our own desire. ଯେହେତୁ ଆମେ ଆମ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରୁ ମୁକ୍ତ ନହୁଁ, ତେଣୁ ଆମ ନାଁ ତ ବୈଷ୍ଣବ ଭକ୍ତ ଲିଷ୍ଟରେ ଆସିବା ଭାରି କଷ୍ଟ. ମୋ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ଯଦି ତୁମେ ମୋ ନାଁ ଖୋଜିବ ପାଇବନି, ଯାଅ ତଳକୁ ଏକଦମ ଶେଷକୁ ଯାଅ, ହୁଏତ ସେଠି ଥାଇପାରେ. My Gurudev said, if you search the list of Vaishnava devotee, you will not find my name. You go to the bottom, you may get my name, I am not sure. भगवान इति दयालु, इति कृपालु, सी तांकर नाम रूप गुण लीला ये समस्त आमको आम निकट प्रकाशित करुचंती. केवल आमे केमती टिके भक्त हवा. भगवान इज सो कंपैशनेट, सो मर्सीफुल. He is manifesting before us His name, form, quality and lila only to make us devotee. ଯେଉଁମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ, କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ସେବା ନେବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଆଗ୍ରହୀ. If someone is Krishna's dear devotee, Krishna is very much interested to accept his seva. ତେଣୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିବା ଯେ ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ କୃଷ୍ଣ ସେବକ, ଗୁରୁ ସେବକ ହେଇପାରିଛୁ କି? So you must think very seriously. Are we really Krishna's servitor, Guru servitor? केते टिके आमर चेष्टा सेवा करिया पाई. How much we are really making effort to do seva. ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ଯେ ଟଲରେଟ୍ ଆଣ୍ଡ କୋଅପରେଟ୍. ତୁମେ ସହ ଏବଂ ସହଯୋଗ କର. କି ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ? ନା
गुरुंकर सेवारे सहायता therefore he said cooperate and tolerate. You tolerate all types of troubles are coming to you and just cooperate with Guru who is always engaged in Krishna Seva. तेणु आमे जदि गुरुदेवंकर सेवारे निजकु नियोजित करि पारलु बा गुरुंकर सेवारे जदि आमे सहायता करि पारलु ताहले आमे कृष्णंकर सेवा करि पारिबु महाप्रभु गौरांगंकर सेवा करि पारिबु गौर धाम को उन्नीत हो पारिबु गोलोक वृंदावन को उन्नीत हो पारिबु अति सहज रे. If you will cooperate with Gurudev, who is always engaged in Krishna Seva, then we will be able to come to the Supreme Lord Krishna, Mahaprabhu Gaura Sundara, and we can attend their dham. The dedicated disciple will never think about his own bhajan. Nivedita prana sisya, उत्सर्गीकृत प्राण शिष्य केबे निज भजन कथा चिंता करिबो ना. से सर्वदा चिंता करिबो जे मु गुरुदेवंकर भजन रे केमती सहयोग करिवि साहाय्य करिवि. He will always think how I will cooperate with Gurudev and help him in his Krishna Seva. गुरु प्रतिष्ठान त्याग ही जाउछि काहे कौन पाई गुरुंकर प्रतिष्ठान त्याग ही जाउछि. Why one is leaving Guru's ashram or institution or temple? Only to get name, fame. केवल प्रतिष्ठा लोभ रे आमे गुरु त्याग कर दउछु, गुरुंकर आश्रम त्याग कर दउछु, गुरुंकर प्रतिष्ठान त्याग कर दउछु. शेषरे बड़ सूक्ष्म भाव रे मायार अधीन ही जाउछु. At last, in a very subtle way, we are going to the trap of Maya. We are getting entrapped by Maya. So, now we can think what type of Hari Bhajan we are doing. आमे वर्तमान चिंता करि परिबा की भलिया भावरे हरि भजन आमे करूछे. ओके, टाइम इज. थैंक यू वेरी मच. जय श्रील गुरुदेव की जय. जय श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय. श्री श्री राधा गोपाल जी की जय. श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा देवी की जय. श्री श्री गौनिताय की जय. जय गौ समवेत गौर भक्त वृंद की जय. निताय गौर मान. जय श्री गुरुदेव की जय. गोपाल.
Huh? Good. Thanks a lot. Damasa? પછી છે અમે અતિ દુર્ભાગ્ય કી પ્રશ્ન କରିବା પચાରିବା Okay. Huh? No question. Okay, okay, very much. Thanks to everyone. Because time is short, we should. Night times, but enough time is there. चलो चलो समस्ते से तो शांति कौन एपट सेपट है खाली बुलुची हाँ